Hello students, this is Jinalisha welcoming you all on behalf of Saraswat International Academy. Students, today we will begin with the new chapter number 6, Anatomy of Flowering Plants. Students, in the previous lectures, in the previous chapter, we have studied regarding the morphology. What do you mean by the morphology? Morphology means a study of the size, structure, form, or in simple form we can say external structure of the flowering plants, in which we have studied regarding the vegetative organs, root, stem and leaves, and also we have studied regarding the reproductive organs, fruit, seeds and flowers, right? Now today students, we will begin with the anatomy of the flowering plants. Now students, what do you mean by the term anatomy? Anatomy means study of the internal structure, study of the tissues. So basically in this chapter we will be studying which are the different types of the plant tissues, then how are these tissues organized to form a tissue system, and how this tissue system is arranged within the plant organs. There are three vegetative organs of the plants: root, stem and leaves. So basically we will see that how are these tissues arranged in root, stem and leaves of the dicots and monocots. So let us begin with the chapter Anatomy of the Flowering Plants. Students, first of all, the introductory part. Now see students, I told you anatomy. Basically anatomy is the internal structure where we will be studying the different types of the tissues. So there is a term called as a tissue. So students, how can we define a tissue? So basically a group of cells which are similar in origin and which are associated to perform the same function, they are called as a tissue. What is a tissue? Tissue is a group of cell and this group of cell will have the same origin. यानी कि जो cells है वो एक ही particular structure में से develop हुए. So they have the same origin and they are associated to perform the similar functions. Such group of cell is called as a tissue. You can easily see the structural similarities and variation in external morphology of larger living organism, both plant and animals. हमने देखा कि externally you can see similarities and variations in both plants and animals. हमने डिटेल में मॉर्फोलॉजी स्टडी की ऑफ द हमने एनिमल किंगडम स्टडी किया, हमने प्लांट्स किंगडम स्टडी किया, हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट्स भी स्टडी की. सो फ्रॉम दैट वी कैन से दैट एक्सटर्नली we can see the similarities as well as differences within the organisms. Similarly, if we were to study the internal structure, one also find several similarities as well as differences. जैसे external study से we have came to conclusion that there are similarities and differences within the organisms. Same way, if we examine the internal structure of the organisms, we can also find the similarities as well as the differences. So in this present chapter, we will study the internal structure and functional organization of the higher plants. Previous chapter में हमने morphology study की. In this present chapter, we will study the internal structure and functions associated with the higher plants. The study of the internal structure of the plants is called anatomy. So what is anatomy? The study of the internal structure. Whereas what was morphology? It was the study of the external structures. Plants have cells as the basic units. Cells are organized into tissues and in turn tissues are organized into organs. See students, this is the hierarchy. The first thing is the cells. Cells will form the tissue. What is tissue? It is a group of cells. And this group of cell is called tissues. When these various types of the tissues, they get organized, what it forms? It forms the organs of an organism. And finally, these organs, they get associated and they form the organisms, and in certain condition, they form the organ system. But when we talk about plants, there are cells which gets organized into tissues
and these tissues, when they get organized, it results in the formation of the organs. Different organs in the plant show differences in their internal structure. Now when we will study this chapter, you will come to know that the different organs, here we are concerned with the three main vegetative parts. One is root, other is stem and finally the leaf. So हम ये root, stem and leaf जब study करेंगे, we will come to know that there are differences in the internal structure. हम dicot and monocot के क्या स्टडी करेंगे? We will study their root, stem and leaves and their internal structure. So when we study the internal structure of root, stem and leaf in dicots and monocots, you will come to know that there are differences found in their internal structures. Within angiosperms, the monocots and dicots are also seen to be anatomically different. Internal structures show also adaptations to diverse environment. So basically internal structure variations तो होते हैं, but basically in certain cases these adaptations are due to the variety of the environment or in the diverse environment, in the different environments in which they are found. So that was regarding the introductory part of this chapter. Now students, first of all the tissues. So what is a tissue? It is a group of cells having a common origin and usually performing a common function. So I told you what is a tissue. So in simple form, tissue is a group of cells. But which type of cells? Those cells which have similar origin, which have common origin and which perform the common functions. Such group of cell is called as a tissue. A plant is made up of different kinds of tissues. Now when we talk about plants, in plants the tissues are mainly categorized into two groups. The two groups are meristematic and the permanent tissues. So basically plant tissues are broadly divided into two categories. One is the meristematic tissue and another one is the permanent tissues. Now students, this classification is based on whether the cells being formed are capable of dividing or not. Now see, ये जो classification है plant tissue का, in which two categories they are divided? Meristematic tissues and permanent tissues. So ये जो division हुआ है plant tissue का, it is based on what? Whether the cells found in the tissues are capable of division or not. What is a tissue? It is a group of cells. So whether the cells found in the tissues are capable of dividing or not, on that basis the tissues, the plant tissues are divided into two categories, namely the meristematic tissues and the permanent tissues. So this is students basically the classification. Tissues on the basis of the capability of the division are divided into two. One is the meristematic tissue and other is the permanent tissues. So what are meristematic tissues? Those tissues whose cells have the capacity to division, and those cells are basically immature cells. So meristematic tissues, the cells of this tissue have the capacity to divide and this tissue is composed of immature cell. Whereas the permanent tissues, their cells have no capacity of division. So basically permanent tissues के जो cell है, they cannot divide and they are composed of mature cells. So these are the two tissues, plant tissues, and this classification is based on whether the cells which compose the tissues are having the capacity to divide or not. Now students, first of all we will begin with the meristematic tissues. So what are meristematic tissues? Growth in the plant is largely restricted to the specialized regions of active cell division called meristem, which is a Greek word meristos, it means divided. So when we observe the plant, when we study the plant, so plant, one thing you should keep in mind that plant में growth it occurs throughout their life.
सो ग्रोथ प्रोसेस प्लांट में होगा कहाँ पे? सो बेसिकली ग्रोथ अकर्स इन द स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ द एक्टिव सेल डिवीजन. प्लांट्स में सर्टेन रीजन्स है कि जहाँ पे कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होता रहता है, एंड ड्यू टू दैट दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ कंटिन्यूसली. So what is a meristem? It is a localized region in which the actual division occurs. So meristem is a region in a plant body where the process of cell division will take place. And we know that if the cell division occurs, it means new cells are being added. It means that the process of growth is taking place. So a meristem, it is a region where the actual process of division takes place. This meristem is an undifferentiated tissues, यानी उसके जो cells है they are not associated to perform the function. They are undifferentiated cells. They are immature cells. जो सिर्फ division करेंगे either they will undergo continuous division, but they won't be associated with particular function. Now what are the peculiarities, what are the characteristics of the cells of the meristematic tissues? So now students, these cells they have only primary cell wall. Now when you study the cell chapter in detail, तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो प्राइमरी मेन सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है. नाउ ऑन दिस सेल्यूलोजिक सेल वॉल there are deposition of certain layers. So these layers which are deposited on the main cell wall, it is called as the secondary walls. Whereas जो main cell wall होता है उसको क्या बोलते हैं? primary cell wall. So यहाँ पे सिर्फ primary cell wall होता है, उनके पास secondary cell wall नहीं होगा. Now this cell wall it is thin and elastic, which means it is flexible. थिन होगा, फ्लेक्सिबल होगा तो ही वो सेल इजीली क्या कर पाएगा? डिवाइड कर पाएगा. एंड इट इज मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज. सो प्राइमरी सेल वॉल इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. हियर द सेकेंडरी सेल वॉल इज एब्सेंट. द सेल्स आर स्मॉल एंड आइसोडायामेट्रिक. सो व्हाट टाइप ऑफ सेल्स आर दे? दे आर स्मॉल सेल्स एंड आर आइसोडायामेट्रिक. आइसो मीन सेम, डायमेट्रिक यानी डायमीटर. सो ऑल सेल्स हैव द सिमिलर डायमीटर. They have the dense cytoplasm. They have the prominent and large, basically it is nucleus. Here it is mentioned wrong. It is nucleus. So they have the prominent and large nucleus. Keep in mind यहाँ पे cytoplasm लिखा है. Basically it is nucleus. So they have a prominent and large nucleus. They do not have intercellular space. It means suppose ये cell है, so cells are arranged compactly. ये cells के बीच में space नहीं है, so they are having no intercellular space. It means the cells are closely arranged together, so it is a compact tissue. Which type of tissue it is? It is a compact tissue. Why compact? Because cells are closely arranged together, leaving no intercellular spaces between them. Inter यानी between, cellular यानी cells. So there is no space between the cells. So that is intercellular, inter, between, cellular, cell. So there is no space between the cells. Why? Because the cells are arranged compactly. They are arranged very close to each other. Now we will study the classification of meristem. So classification of the meristematic tissues. Now on the basis of origin and development, we will see two types of classification. So first type of classification is based on the origin and development. So on the basis of origin and development, the meristem is divided into three categories: promeristem or primordial meristem, then is the primary meristem, and lastly it is the secondary meristem. So meristem on the basis of origin and development is divided into three categories: promeristem or primordial meristem, then is the primary meristem, and finally the secondary meristem.
Let us study each of them. So first of all, the promeristem. So what is promeristem? So the meristem which develops during the embryonic condition. So basically जब plant embryonic condition में होता है and वो embryo में जो meristem होता है, what is that called as promeristem. Okay, see for example seed contains the embryo. अभी seeds में ही cell division होकर नया plant बनता है, तो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है एंड एम्ब्रियो में जो सेल्स है जो मेरिस्टेम है वो कैसे है, प्रोमेरिस्टेम. इट इज द प्रोमेरिस्टेम विच विल फॉर्म द प्राइमरी मेरिस्टेम. प्रोमेरिस्टेम ही कौन से मेरिस्टेम को बनाता है, प्राइमरी मेरिस्टेम. द एग्जाम्पल इज द एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम. नाउ व्हाट इज प्राइमरी मेरिस्टेम? सो मेरिस्टेमेटिक सेल्स डेवलप्ड फ्रॉम द प्रोमेरिस्टेम आर नोन एज द प्राइमरी मेरिस्टेम. ओके, पहला कौन सा मेरिस्टम है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में प्रोमेरिस्टम. अभी ये प्रोमेरिस्टम में क्या होगा, सेल डिवीजन होगा एंड सेल डिवीजन से जो ये नए सेल बने बाय द डिवीजन ऑफ प्रोमेरिस्टम न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड एंड दिस न्यूली फॉर्म्ड सेल आर कॉल्ड एज द प्राइमरी मेरिस्टम. Now what is the function of the primary meristem? So basically first of all keep in mind that it appears early in the life of the plant. So जब plant का development हो रहा है वो टाइम पे जो मेरिस्टेम होता है that is the primary meristem and it contribute to the formation of the primary plant body. यानी general plant body, root है, stem है, leaves है, ये सब formation में जो meristem use होता है that is called as the primary meristem. Cells are always in division phase and form the primary permanent tissues by the process of differentiation. Now students keep in mind कि जो प्राइमरी मेरिस्टम है उनके जो सेल्स है दे आर इन द कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन एंड वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. लिसन वेरी वेरी केयरफुली, परमानेंट टिश्यू टर्म आया. So what is the permanent tissue? कि जिसके cell they have lost the capacity to divide. Now see students, primary meristem के cell continuously divide होते हैं. After division they get differentiated. Now what do you mean by the term differentiation? It means the cells get mature. Mature यानी एक point पे the cells they lose the capacity of division. They basically attain the particular shape, particular size, particular form and finally they form the primary permanent tissues. Listen very carefully, जो प्राइमरी मेरिस्टम के सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डिवाइडिंग फेज में. जो सेल्स डिवीजन करते हैं दे आर कॉल्ड एज अनडिफ्रेंशिएटेड सेल. अभी ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स जो है वो क्या करते हैं, दे गेट फाइनली उनमें डिवीजन बंद हो जाता है एंड दे गेट एसोसिएटेड, दे फॉर्म पर्टिकुलर शेप, दे गेन पर्टिकुलर साइज, फॉर्म एक्सेट्रा एंड दे गेट एसोसिएटेड टू परफॉर्म द पर्टिकुलर फंक्शन. सो प्राइमरी मेरिस्टेम क्या बनाता है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज बाय विच प्रोसेस, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन. The examples of primary meristem are apical meristem, intercalary meristem, intrafascicular cambium etc. ये सब हम डिटेल में ये चैप्टर में स्टडी करेंगे. And lastly it is the secondary meristem. Now see students, primary meristem किस में से बना, प्रोमेरिस्टम में से, right? Now secondary meristem किस में से बनेगा, सो प्राइमरी मेरिस्टम ने फाइनली क्या बनाया, प्राइमरी मेरिस्टम ने प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज बनाए. नाउ आई टोल्ड यू कि परमानेंट टिश्यूज बना दिए. नाउ परमानेंट टिश्यूज के सेल्स ऐसे होते हैं कि दे बेसिकली वोंट डिवाइड, दे हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन. सो अभी क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी मेरिस्टम में से ही सेकेंडरी मेरिस्टम बना, बट प्राइमरी मेरिस्टम के तो सेल्स कैसे है, परमानेंट सेल्स है जिसमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है. सो व्हाट हैपन्स हियर, जो प्राइमरी मेरिस्टेम ने प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज बनाए हैं, दिस प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज दे अंडरगो de-differentiation. See students, what was differentiation? Differentiation was the process where
the cells were getting matured. Now, what happens in the primary permanent tissues? Students, in the primary permanent tissues, the mature cells are de-differentiated. De-differentiated यानी again वो immature cells में convert हो जाते हैं and they gain the property of division. Now, when this de-differentiated cell divides, what it forms? It forms the secondary meristem. Listen very carefully. Primary meristem क्या बनाता है? Primary permanent tissues. This primary permanent tissues, they get de-differentiated. De-differentiated यानी they again gain the process of capacity to divide. ओके अभी ये डिवाइड होकर नए सेल्स बनाएगा विच आर कॉल्ड एज द सेकेंडरी मेरिस्टम. द सेकेंडरी मेरिस्टम इट अपीयर्स लेटर देन द प्राइमरी मेरिस्टम. बाय द एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस. ओके आप सब ने प्लान सपोज से फॉर एग्जांपल हम एक ट्री की बात कर देते हैं. ट्री में प्राइमरी बॉडी बन गई, उसके रूट्स बन गए, स्टेम्स बन गए, लीव बन गए, फिर भी ये ग्रोथ होता रहता है. सो बेसिकली से फॉर एग्जांपल उनका डायामीटर, उनका गर्थ, उनकी थिकनेस इंक्रीज होती रहती है. सो व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी ग्रोथ. सो सेकेंडरी एक प्राइमरी ग्रोथ हो चुका है, प्राइमरी बॉडी बन चुकी है, फिर भी बाद में ग्रोथ का प्रोसेस होता है. सो व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी ग्रोथ. सो सेकेंडरी मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द which type of growth? Secondary growth. The examples are interfascicular cambium and cork cambium of dicot stem and vascular cambium and cork cambium of the dicot root. So इससे अपने को ये कंक्लूजन होता है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ का प्रोसेस है वो सिर्फ किस में होता है? डाइकॉट्स में. मोनोकॉट्स डू नॉट अंडरगो द सेकेंडरी ग्रोथ. सो सी स्टूडेंट्स, हियर इज अ डायग्राम जहाँ पे आपको क्लियर होगा. पहला प्रोमेरिस्टम होता है. दिस प्रोमेरिस्टम इट विल डिवाइड एंड व्हाट इट फॉर्म्स? इट फॉर्म्स द प्राइमरी मेरिस्टम. नाउ प्राइमरी मेरिस्टम के सेल्स कैसे होते हैं? दे आर इन अ स्टेट ऑफ डिविजन. ये सेल्स बाद में जो नए सेल्स बने वो क्या हो जाते हैं? डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं. डिफ्रेंशिएट यानी दे बिकम मैच्योर. मैच्योर यानी दे गेट एसोसिएटेड विथ सर्टन स्ट्रक्चर, फंक्शन एक्सेट्रा. एंड वो क्या बनाते हैं? प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज. नाउ ये जो अभी मैंने बोला कौन सा टिश्यू बना? परमानेंट टिश्यूज. क्या परमानेंट टिश्यूज में सेल डिवीजन की कैपेसिटी है? नहीं है. फिर भी ये कौन सा मेरिस्टेम बनाता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम. अगर डिवीजन की कैपेसिटी ही नहीं है तो कैसे बनाता है? सो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज के सेल क्या होते हैं? डी डिफ्रेंशिएट होते हैं एंड डी डिफ्रेंशिएट होकर क्या बनाते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम. अभी ये सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या करेगा? डिवाइड करेगा एंड डिवाइड होकर जो सेल्स हो गए वो फिर से डिफ्रेंशिएट हो गए. सी सेकेंडरी मेरिस्टेम किस में से बना? डी डिफ्रेंशिएटेड सेल. यानी वो सेल्स तो पहले से ही मैच्योर थे लेकिन वो मैच्योर सेल्स ने क्या हुआ? उनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी आई और क्या बनाया? सेकेंडरी मेरिस्टेम. अभी सेकेंडरी मेरिस्टेम डिवाइड होकर नए सेल बनेगा. सो ये नए सेल फिर से डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं. सो इट इज कॉल्ड एज रीडिफ्रेंशिएशन एंड व्हाट इट फॉर्म्स? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज. So this is the classification of meristem based on their origin and development. Now students, next is the classification of the meristem on the basis of the location in the plant body. यानी meristem कहाँ पे located है उसके हिसाब से there is a classification. So on that basis, on the basis where the meristem is located in the plant body, there are three types. One is apical meristem, सेकेंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड thirdly lateral मेरिस्टम. आपकी बुक में ये क्लासिफिकेशन दिया है. इन योर बुक द क्लासिफिकेशन ऑफ द मेरिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट इज नॉट गिवन. योर बुक कंटेन्स द क्लासिफिकेशन ऑफ द मेरिस्टम on the basis of their location in the plant body and on that basis they are divided into three categories: apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. So students, first of all the apical meristem. So what is apical meristem? जो मेरिस्टम रूट टिप एंड शूट टिप पे प्रेजेंट होते हैं, एपिकल पोर्शन, टिप पोर्शन
टिप पोर्शन कौन सा होगा, एक तो रूट टिप होगी और एक तो क्या होगी, शूट टिप होगी. So the meristems which occur at the tips of the roots and shoots and which produce the primary tissues, they are called as the apical meristem. Normally they are responsible for the increase in the length of the plant. Say for example ये plant axis है, so यहाँ पे shoot meristem है, यहाँ पे root meristem है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं. ये सेल डिवीजन होकर क्या करेगा, ये प्लांट की लेंथ बढ़ाएगा. सेम वे यहाँ पे रूट मेरिस्टम है, इसका डिवीजन होकर रूट की लेंथ बनेगी. सो इनडायरेक्टली दे आर रेस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट्स. दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ, यानी कि प्राइमरी प्लांट स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए एपिकल मेरिस्टम प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Root meristem occupies the tip of the root, while the shoot meristem occupies the most distant region of the stem axis. During the formation of leaves and elongation of stem, some cells left behind form the shoot apical meristem, which constitute the axillary bud. See, we listen very carefully. जब लीव्स का फॉर्मेशन होता है, स्टेम इलोंगेट होती है. से फॉर एग्जाम्पल आई ड्रॉ द डायग्राम हियर, दिस इज अ स्टेम, राइट. सपोज दिस इज अ स्टेम, ये इलोंगेट हो रही है. ओके, स्टेम यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम है. ओके, अभी इलोंगेट होकर वो फिर से लेंथ बढ़ा रही है. सो जब ये स्टेम इलोंगेट होती है तो सम सेल्स रिमेन मेरिस्टेम हियर. ओके, दे लेफ्ट बिहाइंड, थोड़े से मेरिस्टेमेटिक सेल्स यहाँ पे बच जाते हैं. एंड ये जो बचते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज द एक्सिलरी बर्ड. So, during the formation of leaves or elongation of stem, some cells which are left behind from the shoot apical meristem, what do they form? They form the axillary bud. I will explain you again. Say for example, this is a shoot meristem. Okay, so ये shoot meristem कहाँ पे है, टिप पोर्शन पे. अभी ये सेल डिवीजन होकर क्या करेगा, ये पर्टिकुलर स्टेम की लेंथ इंक्रीज करेगा. जब लेंथ इंक्रीज होती है तो थोड़े, या अभी मेरिस्टम यहाँ पे है, बट एट द टाइम ऑफ इलोंगेशन सम मेरिस्टेमेटिक सेल्स रिमेन, एंड दिस लेफ्ट आउट मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर कॉल्ड एज व्हाट, दे आर कॉल्ड एज द एक्सिलरी बर्ड. सो सच बर्ड्स which are present in the axil of the leaves, they will be responsible for formation of a branch or a flower. अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एक्सिलरी बर्ड तो बन गया, लेकिन उसका काम क्या है. सो इट इज़ द एक्सिलरी बर्ड विच लेटर विल फॉर्म द ब्रांच एंड फ्लावर ऑफ अ प्लांट. सो बेसिकली एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स है उनका फॉर्मेशन कौन करता है, इट इज़ द अपाइकल मेरिस्टम. द नेक्स्ट वन इज द इंटरकैलरी मेरिस्टम. सो व्हाट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम? इंटर यानी बीच में, यानी दो मैच्योर टिश्यूज़ के बीच में जो मेरिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरकैलरी मेरिस्टम. द मेरिस्टम विच अकर्स बिटवीन द मैच्योर टिश्यूज़ इज नोन एज द इंटरकैलरी मेरिस्टम. They occur in grasses and regenerate the parts removed by the grazing herbivores. Now see, herbivorous animals, they eat the grasses. Okay, so grasses का थोड़ा पार्ट वो खा लेंगे, थोड़ा पार्ट बच जाएगा. So अभी जो पार्ट्स ग्रेजिंग एनिमल्स में रिमूव किए हैं उसको रीजनरेट करने के लिए इंटरकैलरी मेरिस्टम प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल. It is present either at the base of the internode of the monocot stem, example grasses, sugarcane, or it is present at the base of the leaves, example in the monocots. Now very important students, both apical and intercalary meristem, they are primary meristem. Primary meristem क्या है वो हमने देख लिया. So both apical and intercalary meristem कैसे है, primary है. So as they are primary meristem, they appear early in the life of the plant and they form the primary plant body. So apical and intercalary meristem are which type of meristem? Primary meristem. Why? Because they appear early in the life of the plant and उनका काम क्या है? They will form the primary plant body. Now next one is the lateral meristem. Lateral यानी side पे, lateral यानी side. सो जो मेरिस्टम प्लांट्स के साइड पे होता है, व्हाट इज दैट कॉल्ड एज
लेटरल मेरिस्टम साइड पे है, यानी वो क्या इंक्रीज करेगा, प्लांट की गर्थ, उसकी डायामीटर, उसकी थिकनेस को इंक्रीज करेगा, जबकि एपाइकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या करेगा, लेंथ को इंक्रीज करेगा. सो दे अकर इन द लेटरल साइड्स ऑफ द प्लांट. Activity of the lateral meristem increases the circumference, girth or thickness of the organs. All the secondary meristems are lateral meristem. So जो भी secondary meristem है वो कैसे है, compulsorily lateral meristem. The meristem that occurs in the mature regions of the roots and shoots of many plants, particularly that produce the woody axis and appear later than the primary meristem, is called the secondary or lateral meristem. So what is secondary or lateral meristem? So basically the meristem which appears after the formation of the primary meristem, it is the lateral meristem. And basically जो woody axis, जो wood का formation करता है वो कौन करता है, lateral meristem. They are the cylindrical meristem, fascicular, vascular cambium, interfascicular cambium, cork cambium are the examples of the lateral meristem, and they are responsible for formation of the secondary tissues. See students, this is the diagram showing the position of the meristem. So basically apical meristem which occurs at the tip portion, intercalary, inter यानी between, so these are the two mature tissues. मैच्योर टिश्यूज़ के बीच में का यानी ये पूरा मैच्योर है और ये बीच में मेरिस्टम है, दैट इज इंटरकैलरी. एंड ये साइड पे है विच इज़ कॉल्ड एज द लेटरल मेरिस्टम. दिस इज अ डायग्राम गिवन इन योर बुक. दिस इज द रूट अपाइकल मेरिस्टम एंड दिस इज द शूट अपाइकल मेरिस्टम. एंड सी स्टूडेंट, शूट अपाइकल में ये एक्सिलरी बर्ड बन गया है. सी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंक्रीज हो रहा है, but at the back it is leaving certain cells which is axillary bud which finally will form the it will form the branch or the flower of the plant. So students, this is regarding the meristematic tissues. Now students, we will deal with the permanent tissues. So basically following the divisions of the cells in both primary as well as the secondary meristem, the newly formed cell becomes structurally and functionally stabilized and they lose the capability to divide. Okay. प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम में डिवीजन होकर जो नए सेल्स बनते हैं, दिस सेल्स दे गेट एसोसिएटेड विद सर्टेन स्ट्रक्चर्स एंड दिस सेल दे परफॉर्म द पर्टिकुलर फंक्शंस. So these cells they lose the capacity to divide. By the activity of the primary as well as the secondary meristem, what happens? जो नए cells बनते हैं, these new cells get associated with certain structures and functions and they lose the capacity to divide. So basically क्या होता है, जो प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम के सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं. डिफ्रेंशिएट यानी दे गेट एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. सो सच सेल्स आर टर्म्ड एज द परमानेंट और मैच्योर सेल्स एंड ये परमानेंट और मैच्योर सेल्स क्या बनाते हैं, परमानेंट टिश्यूज. They are composed of the cells which have lost the power of division temporarily or permanently. अभी आप परमानेंट टिश्यूज़ की कैटेगरीज देखोगे. सो बेसिकली ऐसा होता है कि देर आर सर्टेन सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यूज़. वो कैसे होते हैं, उनमें डिवीजन की कैपेसिटी इट इज़ लॉस्ट टेम्पररीली, यानी जो लिविंग परमानेंट टिश्यूज़ है वो डिवाइड नहीं करेंगे, बट एज दे आर लिविंग दे कैन अगेन गेन द कैपेसिटी टू डिवाइड and some of them they lose the capacity to divide permanently. They are formed by the division and differentiation of the meristematic tissues. I told you जो primary meristem है, secondary meristem है, उनका जब differentiation होगा, so what it will form, permanent tissues. During the formation of the primary plant body, specific regions of the apical meristem, it produces the dermal tissues, ground tissues and vascular tissues. ये हम देखेंगे कि apical meristem it will form the dermal tissues यानी external part, ground tissues यानी middle parts and vascular tissues are the conducting tissue. ये कैसे बनते हैं, we will study in the later part of the chapter. The cells of the permanent tissue do not generally divide further. The tissues having all the cells similar in structure and function are called simple tissues, whereas permanent tissues which have many different types of the cells are called as complex tissues.
Now students, permanent tissues are broadly divided into two categories. Whether the permanent tissue, it is made up of only one type of cell or more than one type of a cell. So if a permanent tissue is made up of only one type of cell, यानी वो जो tissue है उसमें सिर्फ एक ही type के cells होते हैं, it is called as the simple permanent tissues. And those permanent tissues which are made up of more than one type of the cells, what are they called as? They are called as the complex tissues. See students, this is the classification given. We will see that, sorry students. So see students, this is the permanent tissues. So permanent tissues are which type of tissues? They are not dividing tissues. Which type of tissues are they? They are the tissues which have lost the capacity to divide. So now see students, these permanent tissues are further divided into two categories. Simple permanent tissues which are made up of only one type of cell, and complex tissues which are made up of more than one types of the cell. Now simple permanent tissues are further divided into three categories. See students, this is not legible, I will write it. It is parenchyma, then second one is collenchyma, and thirdly sclerenchyma. See students, simple permanent tissues are those tissues which are made up of only one type of cell. So they are broadly divided into three categories. The first category is the parenchyma, the second one is the collenchyma, and thirdly sclerenchyma. Sclerenchyma में दो types होते हैं, sclerides and fibres. And those tissues, those permanent tissues which are made up of more than one type of the cells, they are called as the complex tissues. Example, xylem and phloem. Now see students, these are also called as the conducting tissues और vascular tissues, क्योंकि ये दोनों tissues का काम क्या है? Conduction, यानी transportation of food, transportation of water, minerals, etc. So there are two types of the complex or conducting tissues. One is xylem and phloem. See xylem में आप देख सकते हो, it is made up of four different types of cell: tracheids, vessels, xylem fibers, and xylem parenchyma. So as it is made up of four different types of cell, it is a complex permanent tissue. Same way phloem is again made up of four types of cell: sieve tubes or sieve cells, companion cells, phloem fibers, and phloem parenchyma. So as it is made up of four different types of cells, it is which type of tissue? A complex permanent tissues. So students, today we will study in detail a simple permanent tissues. A simple tissue is made up of only one type of cells. All the cells are similar in structure and function. There are three types: parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. So first of all, parenchyma. It is a primitive type of tissue, यानी प्लांट में जो पहला परमानेंट टिश्यू बनता है जो वेल डेवलप नहीं है बट मेन है कि कोई भी प्लांट ऑर्गन में ये टिश्यू तो होने वाला है, दैट इज पेरेन्काइमा. Remaining different types of the tissues are derived from these tissues, so it is called as the fundamental or precursor of other tissues. ओके बाकी कौन से टिश्यूज़ है? कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम एंड फ्लोएम. ये सब टिश्यूज़ किस में से बनने वाले हैं? पेरेन्काइमा में से. सो इसको प्रिमिटिव टिश्यू बोलते हैं जो दूसरे सब टिश्यूज़ को बनाता है. एंड एज इट फॉर्म्स द अदर टिश्यूज़, व्हाट इज इट कॉल्ड एज? इट इज़ कॉल्ड एज द फंडामेंटल और प्रिकर्सर ऑफ अदर टिश्यूज़. प्रिकर्सर, प्री यानी कोई भी टिश्यूज़ बनने से पहले कंपल्सरीली क्या बनना पड़ेगा? पेरेन्काइमा. इट फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन द प्लांट ऑर्गन. अभी आप सब प्लांट ऑर्गन्स डिटेल में स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि प्लांट ऑर्गन में जो मैक्सिममली फाउंड टिश्यू है वो कौन सा है? पेरेन्काइमा. सो मेजर पार्ट ऑफ द प्लांट ऑर्गन इज फॉर्म बाय द पेरेन्काइमा. द सेल्स आर जनरली आइसोडायमेट्रिक, यानी दे ऑल द सेल्स ऑफ द टिश्यूज हैव द सेम डायमीटर. They may be spherical, oval, round, polygonal or elongated in shape. The cell walls are thin and it is made up of cellulose. Each cell contains a large central vacuole. Vacuole है इसीलिए उसका मेन काम रहेगा storage of the food. As it consists of the vacuole, its main function will be the storage of the food. It is either closely packed or may have the small intercellular space. See students, either they have the small intercellular space. देखो ये दो सेल्स के बीच में
छोटी सी गैप है, या इन सर्टन केसेस दे विल बी अरेंज्ड कॉम्पैक्टली. सो either they will be compactly or closely packed or may have the small intercellular space, and their main function is to perform photosynthesis, storage, secretion etc. photosynthesis कब करेगा मैं अभी बताती हूँ. so it performs various functions like photosynthesis, storage and secretion. These are the certain modifications of parenchyma like prosenchyma, erenchyma and chlorenchyma. So what is prosenchyma? The cells of this parenchyma are thick wall. Normally कैसे होते हैं? Thin wall. But in prosenchyma which is a type of the parenchyma only, तो यहाँ पे जो walls होते हैं वो कैसे होते हैं? Thick wall and they have the pointed ends. बेसिकली रूट्स की पेरीसाइकिल, अभी पेरीसाइकिल क्या है वो हम रूट सिस्टम जब स्टडी करेंगे, रूट का डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो क्लियर होगा. इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ. The next type is the erenchyma. It is made up of rounded cell. The cells surround the large air chambers. यानी बेसिकली सपोज ये एक सेल है, ये दूसरा सेल्स है, तीसरा सेल है, ये फोर्थ सेल है. सो हियर यू कैन सी दिस इज अ फिफ्थ सेल. सो दो सेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरसेल्युलर स्पेस है एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड एज द एयर चेम्बर. व्हाट इज इट कॉल्ड एज? एयर चेम्बर. सो बेसिकली द सेल्स आर सराउंडेड बाय द एयर चेम्बर्स. बेसिकली इट इज़ फाउंड इन द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द प्लांट. कॉर्टेक्स यानी हम देखेंगे कि प्लांट ऑर्गन का पहला पार्ट एपिडर्मिस होता है, उसके बाद ग्राउंड टिश्यू जिसमें मेन पार्ट होता है कॉर्टेक्स. वी विल सी दैट इन डिटेल एट द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर. नाउ ये जो एयर चेम्बर्स है उसका काम क्या है? सो इट प्रोवाइड्स द बॉयंसी टू द हाइड्रोफाइट्स दैट इज एक्वेटिक प्लांट्स. एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोटिंग करने के लिए बॉयंसी फोर्स ज़रूरी है एंड दिस बॉयंसी फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द एयर चेम्बर्स फाउंड इन बिटवीन द सेल्स. एंड फाइनली द क्लोरेnchyma. So basically it is a type of parenchyma which contains large amount of chloroplast. So that parenchyma cells which have the chloroplast within them, they are called as sclerenchyma. It is found in the mesophyll of the leaves. Mesophyll यानी leaf का जो main part है it is mesophyll, and as it contains the chloroplast, its function is to provide the or to carry out the process of photosynthesis. So these are the modifications. See, this is parenchyma divided into erenchyma which have the large contains air in its intercellular spaces. So basically cells के बीच में gap बहुत ज़्यादा होएगी which is called as air chambers and it will provide the buoyancy. Prosenchyma, they are elongated pointly and thick walled cells and they provide the support. Then दूसरा टाइप हमने स्टडी किया क्लोरेnchyma. So basically they contain the chloroplast and chlorophyll and their function is to perform the photosynthesis. These are the two extra types. One is storage parenchyma. जो मेन टाइप का parenchyma है वो storage होता है whose function is to store the food materials. And finally the stellate. Stellate means star shaped. So the star shaped parenchyma is called as the stellate parenchyma. So these are the various modifications of the parenchyma. Here you can see the diagram. See intercellular space है but it is less. It is not a large intercellular space. Now see this is the erenchyma. ये normal parenchyma tissue है. This is erenchyma. So देखो यहाँ पे ये white colored का structure है, बहुत बड़ी intercellular space है. And what are these? Basically they represent the air chambers and it provides the buoyancy. ये देखो स्टोरेज पेरेंकाइमा जिसमें स्टार्च ग्रेन्स फूड मटेरियल स्टोर्ड है. एंड दिस इज द क्लोरेंकाइमा कि क्लोरेंकाइमा दो टाइप के होते हैं. वन इज द रॉड शेप्ड क्लोरेंकाइमा विच इज कॉल्ड एज पेलिसेड टाइप एंड अदर इज राउंडेड सेल विच आर कॉल्ड एज स्पॉन्जी. सो दिस ऑल हियर यू कैन सी इट इज ग्रीन कलर विच कंटेन्स द chloroplast and as it contains the chloroplast it will be responsible for carrying out the process of photosynthesis. So that was regarding the parenchyma. Now next type is the collenchyma. It is a living mechanical tissues. यानी ये cells कैसे है? living है. It occurs in the layers below the epidermis. अभी plant organ का कोई भी first part वो कौन सा है? epidermis. epidermis के नीचे के जो cells है dicot में वो mainly किसके बने हैं? collenchyma. That region mainly is called as the hypodermis. It is either found as a homogeneous layer or in patches. Either वो continuous layer में होगा या patches के form में होगा. It consists of the cells which are thickened at the corners due to the deposition of cellulose, hemicellulose and pectin.
ओके, सो उसका जो एंगुलर रीजन होता है, उसका जो कॉर्नर्स होते हैं, द कॉर्नर्स ऑफ दिस सेल्स दे आर थिकन्ड. क्यों थिकन्ड है? बाय द डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन. ओके, अभी ये सेल्स नॉर्मली बहुत फ्लेक्सिबल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेक्टोसेल्यूलोज, यानी पेक्टिन, सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज की वजह से ये सेल्स कैसे है? फ्लेक्सिबल है. सो इट बेसिकली प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी इन द डाइकॉट स्टेम. When we talk about their shape, it may be oval, spherical or polygonal and they may often contain the chloroplast. अगर chloroplast कोलेनकाइमा cells में होते हैं तो वो photosynthesis का काम कर सकता है. These cells assimilate food when they contain the chloroplast. So if they contain chloroplast, they will carry out photosynthesis and prepare the food. Intercellular spaces are absent, यानी the cells are compactly arranged. Function to provide the mechanical support to the growing part of the plant such as young stem and petiole of the leaf. See ये leaf है, ये और ये उसकी petiole है. petiole को support देना, उसको mechanical strength provide करना किसका काम है? कोलेनकाइमा का. So students, these are the different forms of the कोलेनकाइमा. See students, these are the thickened corners. So ये thickened corner, ये red regions है, these are the thickenings. Then this is the protoplasm, vacuole तो होता ही है. These are again the thickenings and these are again the thickenings. So basically उसके walls पे thickenings होते हैं. The last type of the simple permanent tissue is sclerenchyma. So it is a dead and mechanical tissue. So ये जो tissues है वो dead है, यानी ये कभी भी फिर से डी डिफ्रेंशिएट होकर डिवीजन नहीं कर सकता है. जबकि पेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा लिविंग टिश्यूज़ है, दे आर परमानेंट टिश्यूज़ बट लिविंग. सो उनमें डी डिफ्रेंशिएशन होकर वो फिर से सेल डिवीजन की कैपेसिटी गेन कर सकते हैं. बट स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ एज दे आर डेड, दे कैन नॉट अगेन गेन द कैपेसिटी टू डिवाइड. क्या कभी भी डेड पर्सन या डेड चीज़ फिर से लिविंग फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है? नहीं. So as it is a dead tissues, it can never get de-differentiated. Sclerenchyma consists of long, narrow cells with thick and lignified cell wall having few or numerous pits. Now see students, I told you that cells of the sclerenchyma are dead. क्यों dead है? So इनमें deposition है lignin का. It contains the deposition of lignin. Lignin is a chemical and lignin की वजह से ये cells कैसे हो जाते हैं? Dead. Now ये lignin का deposition sometimes it forms the pit. Okay, the deposition of the lignins may leave the pits or may form the pits. Various types of the pits are formed due to the deposition of lignins. The cells are dead and without the protoplasm. They do not have the intercellular spaces. It means the cells are compactly arranged. It provides the mechanical support or mechanical strength to the plant organs. On the basis of variation in form, origin, structure and development, there are two types. One is fibers and another one is sclerides. So first of all, we will study sclerenchymatous fibers. The fibers are thick-walled, elongated and pointed cells. So those sclerenchymatous cells which are thick-walled, elongated and pointed, that is they are pointed at both the ends. They occur in groups and in various parts of the plant. They are the longest cell of the plant body. कोई भी प्लांट में जो सबसे बड़ा सेल है, इट इज़ द स्क्लेरेनकाइमेटा फाइबर. इट इज़ थिक वॉल, ल्यूमेन इज रिड्यूस्ड. ओके, उनमें ल्यूमेन कैसी है? रिड्यूस्ड है. दैट इज़ उनकी जो कैविटी होती है वो बहुत छोटी होती है, नैरो होती है. देयर सेल वॉल कंटेन सिंपल एंड बॉर्डर्ड पिट्स. स्क्लेराइड्स, दे आर स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल, हाईली थिकन डेड सेल्स विथ नैरो कैविटीज़. They have simple pits and lumen here is again very narrow. यहाँ पे तो reduced ही है, reduced है यानी नहीं भी हो सकते. यहाँ पे lumen है, cavity है, but it is narrow. They are commonly found in the fruit walls of nut, pulp of the fruits like guava, pear and sapota. Sapota is chiku. Seed coats of legumes and leaves of the tea. These are the region where the sclerides are found. And it provides the mechanical support to the organs. So basically sclerenchyma का काम है to provide the mechanical support. See students, this is a fiber, this is a scleride. It is pointed at both the end and it has the lumen. Lumen is there, it is very big lumen, but कैसा है? Narrow है. Here lumen is small, it is reduced and these are the pits which are formed.
See students, this is a scleroid where here you can see a lumen, okay, and this is the thick wall, and here you can see the fibers. These fibers, the ends are pointed. So that is regarding the simple permanent tissues. So students, I end my lecture here. In today's lecture, we have studied regarding the meristematic tissues in detail. We have also studied the permanent tissues classification, and we have studied the simple permanent tissues in detail. In next lecture students, we will be studying the complex permanent tissues as well as the tissue system. Thank you students.